Okay, so today we'll start with the lecture that is algebraic expression. That is, today is the first lecture of algebraic expression, and as we know that we have covered all other chapters, and only a few chapters are left. So we will be covering that inshallah very soon. Now, today we'll start with the algebraic expression. This is also very important chapter. So first we will see that what is algebraic expression. What is algebraic expression? Okay, now algebraic expression means an expression which consists of terms separated by plus और माइनस साइन भी जो टर्म्स हो और अगर टर्म्स हैं तो दोज आर सेपरेटेड. अभी सही चल रहा है स्क्रीन एंड ऑल एवरीथिंग? Okay, so separated by plus or minus sign. Okay, now if we talk about this means algebraic expression, that means what terms basically mean. If we see this term, so it is made up of two components. Okay, one is what known as numerical coefficient. Generally we call it constant, and one is the literal coefficient. Normally we that consists what we call it the variable part. For example, if I have written minus 5x square, okay, now this minus 5, now it will be considered as the constant, okay, this one, and this x square will be considered as the literal coefficient, and this 2 will be considered as the power of this. Okay, that will be considered as the power. Okay, so when these kind of terms are present and they are separated by plus minus sign, that is called what? The algebraic expression. For example, if I have written here 5x square minus 2y, this is an algebraic expression because these are made up of terms separated by minus sign. Even I have written, for example, 5x, this means algebraic expression. This is also an algebraic expression, and it consists of only one term. Okay, now one thing that is associated with algebraic expression is means the power of the algebraic expression can be a decimal, can be a fraction, can be a root. Means the power could be anything. Means if I write like this, 10x to the power 0.2 minus y to the power root 5. So this is also an algebraic expression. Okay, this is also an algebraic expression. Now, you will call it means, then sir, what is the difference between polynomial and algebraic expression? Polynomial is also an algebraic expression. Polynomial is also means those algebraic expression means in which the powers, the powers are only whole numbers. So they will be called as what? The polynomial. So polynomial is also an algebraic expression. Means if I call this expression, I can call this expression as algebraic expression. But I cannot call this
I cannot call this as polynomial. Okay, I cannot call this as a polynomial because the power here is root and here is decimal. And for polynomial, the condition is the power should be a whole number. Getting my point? Okay. Now, the power for an algebraic expression, the power can also be negative. For example, if I write here minus 10 x to the power minus 2. So this is also an algebraic expression. Because the power is negative, it is having a power, it is having the variable, it is having the constant. Now, if I say that, for example, 5, if I've written only 5. Okay, so is this an algebraic expression? So answer will be 1. The answer will be yes. Because this can be written in the form of like this, 5x to the power 0. We can write it like this. We can write it like this, that is 5x to the power 0. Okay, 5x to the power 0. This 5 can be written in this, that is 5x to the power 0. Okay, so this 5 is also an algebraic expression. Getting my point? So if we talk about the algebraic expression, so as it is written over here, means all these details are there in the NCERT. Okay. See, the terms, the factors, and the coefficient. Okay. Now, it is written over here, the terms can be formed as the product of factors. Factor means, for example, it consists of 4x. So this 4x. So what it will be? Means it is a term. It is consisting of constant and a variable with power 1. So it is telling you the factors can be made, the terms can be made by means multiplying this 4 and x. Okay. Now the expression 7x minus 5x, 7xy minus 5x, it is having two terms. One is 7xy and one is minus 5x. And one thing you also remember that when we write something like that, for example, 7xy minus 5x, so this is one term, this is second term. So the sign is always associated with the term preceding it. Means this minus will not be associated with this. This minus will be associated with this. That all you have to remember this. Okay. So if we talk about the means algebraic expression, so it is telling you that means the terms are what the products of the factors. Okay, in 4x, this 4x is a term and 4 is one factor and x is another factor. Now, then if we see this statement like the expression 7x minus 5x, taking this example again. So what is telling you? It has two terms, that is 7xy and minus 5x. Okay. Now the term 7xy is a product of 7x and y, 7x and y. Because when this 7 will be multiplied with x will multiply with y, it is going to give you what? 7xy. Okay. And the numerical factor of a term is termed as what? Coefficient, as I told you. It's telling you the same thing that I have told you. Okay. About the algebraic expression, what algebraic expression is. So here it is telling you means the coefficient is what? Coefficient is the numerical way that we call it numerical coefficient or constant you call it. Okay. So the coefficient here in this is what? 7xy is 7. For example, if I write minus 5 xyz, so here minus 5 will be considered as the coefficient, or generally we call it the constant.
Okay, we also call it numerical coefficient. In some books you will find numerical coefficient. This will be considered as the literal coefficient. Okay, so in this NCERT, what you have means, if you talk about this one, that is the coefficients that we are talking about, so it is considering the numerical value as the coefficient. Got the point? Okay, now identify the coefficient of each term. Now this is an algebraic expression, that is x square y square minus 10x square y. Okay, let me scroll it up. Okay, x square y square minus 10x square y plus 5x y square minus 20. Now this algebraic expression contains how many terms? My question is, this algebraic expression contains how many terms? Two terms. Are you sure? See it carefully. X square y square is one term, minus 10x square y is second term, plus 5x y square is the third term, and minus 20 is the fourth term. Four terms are there. Clear or not? Okay, now if we talk about x square y square, now tell me the coefficient. When we talk about here in this chapter coefficient means you have to tell the constant value. You have to tell the value of the constant. Okay. So what is the constant or coefficient for x square y square? कैसे होगा? कोफिशिएंट कैसे होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर मींस अगर यहां पे x है तो ऑब्वियसली इस जगह पे क्या है ये बताओ, इस जगह पे क्या होगा? जहां पे कोई भी आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है वहां पे कांस्टेंट क्या होता है? भाई जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है तो यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस 10x स्क्वायर वाई है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा। गॉट द पॉइंट? हाँ, अब ये बताइए माइनस 10x स्क्वायर वाई इसका कोफिशिएंट क्या होगा?
वेरी गुड। प्लस 5x वाई स्क्वायर का वेरी गुड, और -20 का कोफिशिएंट -20 खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट विल बी -20। ओके, सो दिस वाज मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमें पता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जो टर्म्स का बना होता है। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जो है वो कोफिशिएंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होते हैं, मींस दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। मींस अगर इन शॉर्ट में क्या है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं और ये फैक्टर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे 4x है तो 4 यहां पे कांस्टेंट है, x यहां पे वेरिएबल है, या फिर इसको हम कोफिशिएंट भी कहेंगे 4x का। तो ये 4 और x दोनों क्या है? फैक्टर्स हैं। they both are what? The factors. Okay, because they are multiplying and giving what? The term. So till now we have studied this. Now coming to the monomial, binomial and polynomial. As I told you, polynomial क्या है? polynomial कुछ नहीं है, वो भी एक algebraic expression ही है। algebraic expression। ओके, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर होता है वो क्या होगा? एक होल नंबर। इसीलिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे 5, क्योंकि 5 को हम 5x to the power 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 ओनली। ओके, तो यहां पे हम यही बात कर रहे हैं कि इस 5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखो इसके पास कोफिशिएंट भी आ गया, इसके पास वेरिएबल भी आ गया, पावर होल नंबर है। तो इससे 5 क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें एक पॉलिनोमियल है, मींस पॉलिनोमियल भी है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पे 5x to the power -1, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे वही हमसे कहा जा रहा है कि ये जो मींस पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल किसको कहेंगे? तो देखो, मोनो मींस होता है 1, बाई मींस 2, पॉली मींस मैनी। ठीक है, तो देखो वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल, देखिए वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ओके, तो इसीलिए पॉलिनोमियल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। सी हियर व्हाट इज सेइंग? नॉन जीरो कोफिशिएंट मींस with variables having non-negative components। जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो यहां पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक या उससे ज्यादा टर्म हो और उनका जो कोफिशिएंट हो उन टर्म्स का वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए? with variables having non-negative exponents। जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसे यहां पे इन्होंने एग्जांपल्स दिया, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स लाइक 4x स्क्वायर। नाउ दिस इज आल्सो एन, देखो यहां पे ये जितने लिखे हुए हैं ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो यहां पे ये 4x स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल, दिस ऑल दीज आर व्हाट? मोनोमियल। नाउ अब अगर हम बात करें यहां पे, जैसे यहां पे दिया हुआ -7z, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -7, और इसका जो वेरिएबल है वो क्या है? दैट इज z। ओके, गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से यहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी दो टर्म्स, देखो a प्लस बी, दो टर्म्स है यहां पे a और प्लस बी।
यहाँ पे भी 4l प्लस 5m, एक टर्म है 4l, दूसरा है प्लस 5m, तीसरा a प्लस 4, एक है a और दूसरा है 4, 5 माइनस 3xy, एक है 5 और एक है माइनस 3xy, ठीक है। इसी तरह z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, सो यहां पे दो टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल्स की आपके पास एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स जैसे यहां पे दिया हुआ है, हालांकि पॉलिनोमियल ये स्पेशली मोनोमियल है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, यानी ये मोनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और फिर मोर देन 3 टर्म्स है तो ये पॉलिनोमियल है। बट पॉलिनोमियल के लिए हम वन और मेनी टर्म्स को भी ले सकते हैं, ये सब बाइनोमियल भी है और जनरली ये पॉलिनोमियल भी है। गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट टिल नाउ? अब जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 7xyz माइनस 10। अब देखो, इसीलिए पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स हैं, दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तीसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 2 टर्म्स हैं, चौथा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 3 टर्म्स है। तो देखो हर तरह के एक्सप्रेशन का एग्जांपल दे दिया ताकि पॉलिनोमियल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया 5 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। नंबर भी पॉलिनोमियल है। -10 मैंने लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है। 2/3 लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है 7xyz माइनस 10 है, इसमें कितने टर्म्स हैं? टू है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे 7xyz का कांस्टेंट क्या होगा? वेरी गुड, +7 विल बी देयर। चलिए, तो अब ये बताइए, ये वाला एक्सप्रेशन दिस वन, ये क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है? यू हैव टू क्लासिफाई इट मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। You can write only M, B or T. Very good. This one, ओके, वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये हमारा बाइनोमियल है, ये हमारा ट्राइनोमियल है, ये हमारा ट्राइनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है, और ठीक है, दैट इज मोनोमियल। See, number is also what? A polynomial, because this 17 can be written in the form of any variable, 17y0, 5x to the power 0, like this. We can write it like this. Okay, now coming to the next, that is construct 3 binomials. We have to write 3 binomials with only x as variable. Means we have to write the binomial. We have to write the binomial, and we have to write 3 binomials. And here we have to consider only x as variable. Only x as variable. Okay, so binomial we can write, means if the variable will be used, so that will be only x. So we can write like this: -10 x square plus 5x. This could be the case. 10x minus 2. This is also binomial. Can you give any third example of this? Binomial with x as variable.
Yes, binomial with x as variable. Yes, very good. That is 2x plus 1. Very good. Excellent. Okay. Now it is talking about three binomials with x and y as variable means the terms will be having x and y variable, means you can use xy at once. We can use xy in different terms. So for example, we can make it like this: 5x plus 3y. Okay, 5x plus 3y. This could be one binomial with x and y as a variable. We can also write it like this: 5xy plus 3xy square. So here also we have used what? We have used xy as variable, and we have made only two terms. One term is plus 3xy square and another term is plus 5xy. Okay. So till now we have discussed means what algebraic expression is, what are terms, and what are different kinds of polynomials, that is mono, bi, and tri. What is the basic difference between algebraic expression and a polynomial? Then tomorrow we will start. Tomorrow is Thursday, so we will be having what here now. Okay, so we have covered friction. So what was the next chapter you talked about? वॉइस लैग हो रही है. ओके, चलिए फिर अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह. मींस क्योंकि तबीयत भी नहीं सही चल रही है, बट क्लास लेनी है. बहुत ज्यादा अगर तबीयत हो रही तो मे बी द केस, बट आई विल इन्फॉर्म इंशाल्लाह अबाउट दैट. ओके. Okay then, stay home, stay safe, goodbye. Assalamu alaikum.